Hello friends, I am Shantanu, your coach, and now we are going to cover important topic, that is valuation of shares. This topic is divided into two parts. Part A covers the basics of the valuation, and in part B we are going to see the different methods of valuation of shares along with the practical problem. Now let's start with the term value. Value is basically a very complex subject. It is very difficult to understand the term value. Everything in this world has some value. ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज इस वर्ल्ड में है उसकी कुछ न कुछ वैल्यू है, एंड ये जो वैल्यू है इसको प्रिसाइसली कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता. इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड. इसका केवल आप अनुमान लगा सकते हैं. You can estimate the value, but nobody can find the exact value of a particular thing. For example, cigarette, if we talk about cigarette has some value for persons who are smokers. But for non-smokers, अगर कोई person smoking नहीं करता है, उसके लिए सिगरेट की वैल्यू 0 है. अगर आप उसको फ्री में भी ऑफर करेंगे सिगरेट, so he will not take that cigarette. So you can see here that the value is also a relative term. It differ from person to person. किसी person के लिए किसी particular item की value बहुत ज्यादा हो सकती है और दूसरी तरफ किसी person के लिए उसी item की value 0 भी हो सकती है. Now let's try to find out the meaning of the term value. जो हम value की बात कर रहे हैं इसका actual मतलब क्या होता है? What is the exact meaning? Value means the worth, importance or usefulness of something. किसी भी commodity को ले लो आप, किसी भी चीज को ले लो आप, उसका अगर कोई worth है तो हम उसको बोल सकते हैं कि there is some value. If it is important to someone, then you can say there is a value, or if it has some usefulness. So worth, importance or usefulness of the particular thing decides its value. Now after looking at the value, we will try to find out the meaning of the term valuation. Valuation क्योंकि हमको पढ़ना है chapter valuation of share. So valuation का मतलब क्या होता है? It is basically estimating the monetary worth of something. यानी जब हम उसको रुपीस में किसी भी commodity को या किसी भी particular thing की जब हम monetary value पता करते हैं, estimate करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं valuation. और ये जो पता होता है at any given time at a place for a particular person. So valuation is basically estimating the monetary worth of something at a given time and given place. Here it is also important to know that how things gain value. कोई भी particular commodity है, वो अपनी value कैसे gain करती है. For example, there is a diamond. अगर कोई diamond है and this diamond has some value in it. Why diamond has so much of value? Because the major reason is the desire of the persons. So people desire that we should have one diamond to wear as a jewelry. And since there are so many people in this world, they desire about having a diamond. And this increases the value of the diamond. But you should also aware that diamond can also be used for other purpose, for cutting a glass. Glass cutting के लिए भी diamond का use होता है. That is its utility. But इसकी जो value इतनी ज़्यादा है, it is because of the desire. So there are so many factors which are responsible for creating a value for any particular thing. Now apart from desire, there are some other factors like need. अगर आपको कोई चीज जरूरत है उस चीज की तो आपको need की वजह से भी उसकी वैल्यू रहती है. Want, अगर आपको कुछ चाहिए, it is not a desire but it's a want, then also it has some value. For example, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है और आपको चॉकलेट चाहिए, you want that chocolate, so chocolate has got some value because of the want. Then
also comes the factor resources. If a person is having so many resources, then he can spend on particular thing. The best example to understand resources is the auction. Auction जब होता है, in auction sale, there is a price fixed for a particular thing. Let's say IPL का player है, IPL के प्लेयर के लिए बेस प्राइस इन्होंने डिसाइड की है 5 लाख रुपीस, बट देयर आर सो मेनी बिडर्स, बहुत सारे बिडर्स हैं यहाँ पर जो अपनी टीम में इसको लेना चाहते हैं प्लेयर्स को. ये प्राइस इसकी बढ़ती जाती है. लाइक ही हैज गिवन द बिड ऑफ लेट्स से 10 लाख रुपीस, दूसरा जो फ्रेंचाइजी है वो उसकी 1 करोड़ की बिड कर देता है, तीसरा 5 करोड़ की. तो यहाँ पर रिसोर्सेस इनके पास हैं. Because of this resources, the value of this player keep on going to increase. Then comes the knowledge. This is also very important factor. अगर किसी पर्सन से बोले जो रोड पे जा रहा है, उससे आप बोलेंगे कि भाई रिलायंस कंपनी का शेयर है वो आपको अभी 150 रुपीज में मिल रहा है, 150 रुपीज. And if you ask this person, do you want to purchase this share of Reliance? Now he is not aware of the Reliance company at all. He is not connected to capital market. Capital market के बारे में इसको कुछ भी नहीं पता है. So he may, for this person, there is no value of this company's share. But if you go to a person who is dealing in the capital market, जो capital market में दिन रात ट्रेडिंग करता है, और अगर आप उससे पूछें कि ये रिलायंस कंपनी का शेयर 150 रुपीज में मिल रहा है, डू यू वांट टू बाय, सो ही विल चेक द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस देखेगा रिलायंस कंपनी के शेयर्स की, कंपनी के फंडामेंटल्स देखेगा, और पता चलता है कि मार्केट प्राइस इस शेयर्स की 800 रुपीज है और 150 रुपीज में मिल रहा है. So he is aware of this thing and he will get this Reliance share for 150. Even he can pay up to 700 or let's say 750 rupees for this Reliance share because the market price is very high. So knowledge also play an important role for gaining the value of any particular thing. And then comes another factor, that is scarcity. उसकी उपलब्धता, यानी अगर वो अवेलेबिलिटी उसकी कम है किसी आइटम की तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉकीज में मूवी देखने जा रहे हैं और वहां पे हार्डली 5 टिकट्स आर लेफ्ट, 5 ही टिकट्स बचे हुए हैं. अब ये 5 टिकट, नॉर्मल प्राइस इसका कितना है टिकट का, 100 रुपीज, बट पीपल मे सेल दिस टिकट्स फॉर लेट्स से 500 to 1000 rupees also because the availability of these tickets are very limited. Here also you have to understand the meaning of the term need, desire and want. इसमें differentiate करते आना चाहिए आपको. Need is something you cannot live without. आप जिसके बिना नहीं रह सकते उसको हम कहते हैं need. Such as air, water, food, all will come under the need of person. Want is something that you don't absolutely need but will make your life little better. For example, you want a chocolate, आपको एक चॉकलेट चाहिए या फिर आपको आइसक्रीम चाहिए, आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी. आपको टेलीविजन चाहिए. Like these are the wants of any person and it increases the value of the commodity. Now come the desire. Desire is something you wish to have regardless of your needs and wants. So in desire there is some element of fascination. Fascination से ये related है. बहुत सारी wants है और उसमें कुछ हो सकती है जो desire है. It is related to fascination for a particular thing. So here is the best example is the diamond. You want to wear the diamond, so this is come under the desire and it increases the value of that diamond. Now very important thing which you have to note here is that value is not the price. So value and price are totally different thing. You cannot merge these terms. There are some high priced item. For example, diamonds and golds these are the highly priced item, whereas there are some highly valued item. For example, air, water are highly valued,
but their prices may not be that much. So since we are studying the valuation of shares, suppose there is a company, एक कंपनी है और इस कंपनी का जो शेयर है उसकी जो मार्केट प्राइस है 180 rupees. Now this is a market price, but the value of this share may be more than this or may be lower than this. Let's say the value of this share may be 300 rupees, but the market price is 180 rupees. So if this is the case, more and more people will like to buy the shares of this company, and because of this demand, the price of this share keep on increasing. So from this concept, you can understand that price of anything follows the value of that particular thing. But price and value may not be the same. Price और value अलग अलग हो सकते हैं. Now let's talk about the valuation criteria. Each thing has its own criteria for its valuation. For example, valuation of share, there will be different criteria. For valuation of any diamond or jewelry item, there will be different criteria. Valuation of any particular person or student, there will be different criteria. So you have to understand that each thing has its own criteria for its valuation. Further, let's take one example. There is a ICU room which is available in any hospital for just 1000 rupees per day. ICU available है, that is ICU का room available है, intensive care unit का room available है आपको 1000 rupees में. If you ask a healthy person who is totally fit whether you want this room for one day, 1000 rupees में मिल रहा है ICU room, so he will say no thanks, इसके लिए अभी इसकी value 0 है. But if a person who is badly in need of ICU room, he can say that I can pay more if required. यानी 1000 rupees से भी ज्यादा पे करने को तैयार है if he requires this ICU room. Similarly, you can take another example of woolen clothes. Woolen clothes value at Chennai, which is very, very hot, will be different, and the value at Srinagar, which is very, very cold, will be different. So in Srinagar, the value of woolen clothes will be high, and at the Chennai, the value of woolen clothes will be low. Similarly, as per the season also it varies. In winter, the value of woolen clothes will be high, and in summer, the value of woolen clothes will be lower. So this example clearly shows that the timing and the place of the offer or the place or time in consideration also matters to decide the value of particular thing. Now let's talk about the valuation of a company. As you are aware that company is an artificial person. A company एक person है. Although it's an artificial person, but it's a person. So to understand the valuation of company, first we can take the example of valuation of a person, or let's say valuation of a man. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है, then you will be able to understand the valuation of company as well. For this purpose, valuation of men के लिए हम एक example देखेंगे. अब ये जो example है, it is just for academic purpose. Academic purpose के लिए हम इसको देखेंगे. It is not my views. So if at all you are not in agreement with the facts which are given under the example, you may ignore this example and directly move to the valuation of share. So let's take the example for valuation of a man. अगर कोई भी person है, यानी कि कोई आदमी है, man है, उसका अगर आपको valuation करना है, तो research के basis पे ये example है. As per the research, ये criteria होता है देखने का for valuation of a man. Here we are totally ignoring the emotional values of humans. Emotional जो values हैं, emotions हैं, उसको हम ignore कर रहे हैं.
और इसमें केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मैन. So for the purpose of valuation of men, there are two criterias, criteria A and criteria B. Criteria A जो है उसमें आप देखते हैं उसके पास कितनी एसेट्स है. ज्यादा अगर एसेट्स हैं, उसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी उस पर्सन की. इसी तरह से दूसरा क्राइटेरिया है प्रॉफिटेबिलिटी का. वो बहुत प्रॉफिट अर्न करता है तो भी उस पर्सन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. और अगर किसी पर्सन के पास दोनों क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है, एसेट्स भी बहुत है और प्रॉफिट्स भी बहुत अर्न कर रहा है, तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी. तो जब हम बात करते हैं एसेट्स की, तो क्या इस पर्सन के पास जिसका नाम है मिस्टर एक्स, इसके पास क्या अपना घर है, अपनी गाड़ी है, बहुत बैंक बैलेंस है, इसके पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट है? अगर ये सब इसके पास है तो यू कैन चेक आउट दिस क्राइटेरिया ऑफ एसेट बाय चेकिंग दिस हाउ मच ही इज हैविंग ऑल दीज टाइप ऑफ स्टफ. So more the value of these items he is having, the more will be the value of this man. Similarly, the second criteria is about the profit. हो सकता है किसी पर्सन के पास ये बहुत सारा हो, लाइक अपना घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सारी एसेट्स हैं, बट ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इसके पास प्रॉफिटेबिलिटी भी है, क्या ये कमाई भी करता है, कुछ रेगुलर रेवेन्यू इनकम है इसकी. So if it is having some regular income, good regular income, then also it will have some value. So there may be a case when one person fulfilling the criteria of A, that is बहुत सारी उसके पास asset है, तो भी इस person की काफी value होगी. And on the other hand, if a person is not having so much of asset but he is having a regular income of huge value, then also he will be having a high value. And if a person is having both these, बहुत सारी एसेट्स है और बहुत सारी उसकी रेगुलर इनकम है, तो ये तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, जैसा कि कहते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द पास्ट स्लाइड दैट कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, तो कंपनी के लिए भी आप ये क्राइटेरिया देख सकते हैं. तो ये जो मिस्टर एक्स है, या फिर ये मान ले कि एक कंपनी है, तो कंपनी के पास कितना सारा एसेट्स है. दो चीजें बहुत मैटर करती है, हाउ मच एसेट्स द कंपनी इज हैविंग एंड हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी इज जनरेटिंग. इफ दीज क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड, देन द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी विल बी हाई. So what we have learned from this example, for valuation of company, there are two main criteria. One is the assets of the company, and another is the profitability of that company. Another thing which you have to remember, that the value of any company depends on the value of its shares. Shares की उसकी value अगर ज्यादा है तो value of the company will be high, and on the contrary, you can say that the value of the company is high, then the value of share will also be high. So one thing you have to note it down, that the value of company depends upon the value of its shares, or you can say the vice versa. That is, the value of the share also depends upon the value of the company. Now let's see the valuation of shares. जो शेयर का वैल्यूएशन रहता है, उसके लिए जो मेन फैक्टर्स हैं, दो मेन फैक्टर्स हैं. फाइनेंशियल पोजीशन देखना है आपको उस कंपनी की, उस कंपनी के शेयर की वैल्यू पता करने के लिए उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखना है. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जिसमें एसेट्स रहती है और लायबिलिटीज रहती है. दूसरा आपको देखना है प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है. तो मेन जो फैक्टर्स हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, वो दो हैं, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी. बट देयर आर सम एडिशनल फैक्टर्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ शेयर. अब अज्यूम कीजिए एक कंपनी है और ये कंपनी में एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने इस कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं
लेट्स से 1000 शेयर्स ले रखे हैं, 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इसका मतलब 1 लाख रुपीस इसने इन्वेस्ट कर रखे और ये कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, ये जो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो कितना करती है वो भी डिसाइड करता है इस कंपनी के शेयर की वैल्यू को। दूसरा क्राइटेरिया है मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी। इसके पास, इस कंपनी के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, that is the quality of employee, that also affect the value of share of this company. Then another criteria is the demand of its products and services. ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो वैल्यू ऑफ दिस कंपनी विल गो अप। Another factor is the risk involved in this business. अगर ज्यादा रिस्की बिजनेस है तो वैल्यू कम होगी उसकी शेयर्स की, अगर रिस्क कम है तो वैल्यू ऑफ दो शेयर विल बी हाई। इसके बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। इसके जो फ्यूचर में प्लान्स क्या है, फ्यूचर के आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, उसके ऊपर भी शेयर की वैल्यू डिपेंड करेगी इस कंपनी की। Then another important factor is the government regulations. ये जो बिजनेस कर रही है कंपनी, उस बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो किस तरह के हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं या लिबरल रेगुलेशंस हैं, तो ये भी काफी डिपेंड करता है इसके ऊपर कि हाउ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ दिस कंपनी विल गो अप और गो डाउन। And now we are going to see different methods which are used for the purpose of valuation of share. Now first let's see how many methods are available for the valuation of shares. There are total 3 methods, main methods, that is the net asset method, second is yield method, and third is the fair value method. So as the name suggests, the net asset method is based on the assets and the yield method is based on the profitability. And the fair value method is nothing but the average of two values which you get from the net asset method and yield method. Now in the yield method, there are 3 methods which have been prescribed. First is based on the dividend, that is dividend capitalization method. Second is based on the earning, and we name it earning capitalization method, and the third is productivity factor method. So all these methods we are going to study. First we will see the theoretical aspect of these methods and then we will see the practical problems. To get more and more free videos, please subscribe our channel, like and share our videos, post your comments and press the bell icon to get the notification of new videos. Thanks for watching.